Welcome back, guys, to my channel. Today, we are going to start with the fourth chapter of practical work in geography class 12. ओके, तो इस चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में, किस तरह कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग में हम सबको हेल्प करेगा बनाने में. ओके, हम सब जानते हैं कंप्यूटर बहुत ही इफिशिएंट होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं एज ह्यूमन कंपेयर मैनुअल से कंपेयर किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं कुछ कंप्यूटर से पार्ट्स को दिखाया गया है सो दैट यू कैन कोलरेट. अब सभी कंप्यूटर चलाते हैं, सब मोबाइल सब कुछ. सो इट बिकम्स easier for us to make a data processing and mapping in computer as compared to the if we are made by the human mates. Okay, तो उसमें टाइम जाता है, कंज्यूमर होता है, पर लेकिन कंप्यूटर के द्वारा हम सब आसानी से बना सकते हैं. सो बेनिफिट बहुत ही हैं कंप्यूटर्स के. तो व्हाट कैन कंप्यूटर्स डू, हम सब जानते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, कैलकुलेशंस. ओके, और बहुत सारे डाटा को कंबाइन स्टोर कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द बेनिफिशियल्स ऑफ द कंप्यूटर. सो एडवांटेजेस क्या क्या हैं. ओके, अब अब देखते हैं जो कंप्यूटर्स जो वर्क करते हैं वो दो चीज पर वर्क कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से. एक हार्डवेयर, ओके, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर रन करते हैं. तो आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए ये हार्डवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर और किस तरह ये फंक्शन करते हैं, किस तरह प्रोसेस करते हैं, तो आप ये प्रोफेशनल्स के द्वारा एक ट्यूटोरियल आपको मिलेगा अभी. आप देखिए, उसमें पूरा एग्जैक्टली क्या होता है सब बताया गया पूरा बारीकी से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. When you look inside a computing device, you see a bunch of circuits, chips, wires, speakers, plugs, and all sorts of other stuff. This is the hardware. But what you don't see is the software. Software is all of the computer programs or code running on this machine. Software can be anything from apps and games to web pages and the data science software that me and my teams use at Amazon to understand how customers behave. But how do the hardware and the software interact with one another? Let's start at looking at a computer's central processing unit, or CPU. The CPU is the master chip that controls all the other parts of the computer. A CPU needs to do different things, so inside it has smaller, simpler parts that handle specific tasks. It has circuits to do simple math and logic. It has other circuits to send and receive information to and from different parts of the computer. The real magic of the CPU is how it knows which circuits to use and when to use them. The CPU receives simple commands that tell it which circuit to use to do a specific job. For example, an add command tells the CPU to use its adder circuit to calculate a new number. And then the store command tells the CPU to use a different circuit to save that result into memory. Just like numbers, all of these simple commands can be represented in binary ones and zeros, or on and off electrical signals. The binary commands are stored in memory, and the CPU fetches and executes them in sequence, one after the other. This sequence of commands is in fact a very simple computer program. These days, nobody writes software in binary. It would take forever. Today, the software we write looks more like this, or this, or even this. Programming languages like these let you type in commands in something that looks a lot like English. To draw a rectangle on the screen, you just need a single command. This high-level command is converted into hundreds or thousands of simpler binary commands that the CPU understands. Software tells the CPU what to do.
But when you're listening to music and browsing the web and chatting with a friend, your computer is running multiple pieces of software all at once. So, how do all of these programs get on the computer in the first place? And how can the CPU run them all at once? To find out, we'll have to take a look at the operating system. The operating system of the computer is the master program that manages how software gets to use the hardware of the computer. For example, I helped create the Windows operating system that runs on most personal computers. The operating system is a program with special abilities that let it control the other software on the computer. It lets you install new programs by loading them into your computer's memory. It decides when a program is run by the central processing unit, and whether that program can access the computer's input and output devices. And when you think your computer is running many programs at once, in reality, it's the operating system that's quickly switching between programs, sharing that CPU for fractions of a second. Every computer is an operating system managing software that controls the computer's hardware. The software is a series of commands made of simple binary code, and that binary code is just electrical signals flowing through billions of tiny circuits. Hope you have understand everything. What is hardware? What is software? तो यदि कॉमन सेंस में बोले कॉमन लैंग्वेज में तो व्हाट इज हार्डवेयर जो विजुअल होते हैं एंड सॉफ्टवेयर जो इनविजुअल होते हैं प्रोग्रामिंग लाइक थिंग्स ओके तो हम सब ये हार्डवेयर पढ़ लिए क्या था किस तरह उसका फंक्शन होता है ओके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स देखिए पर मेनली हम सब इस चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं ओके जिसके द्वारा हम सब मैप एंड डायग्राम्स ये सब मिड मीडियन मोड बनाना सीखेंगे एक्सेल के द्वारा ओके तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर योर यूज में हम सब MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे वो वर्कशीट होते हैं जिसमें हम सब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कर सकते हैं ओके तो कॉमन देख सकते हैं जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो कुछ ओपनिंग सीन ऐसा होगा तो कुछ टर्म्स दिए हैं मेनू ये होते हैं मेनू आइकन ये सब होते हैं सो ये सब टर्म आप याद करिएगा तो आपके लिए इजी हो जाता है तो इसमें से पहले बताइए कॉलम्स क्या होते हैं कॉलम्स देखिए ये वर्टिकल दिस इज कॉलम और एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं 200 आई थिंक 60 या 54 या 56 होते हैं ओके देन कम्स रो इस लाइन का है ओके इसे रो कहते हैं और वो कितने होते हैं 16,384 ओके इन टोटल तो आप इतना यूज कर सकते हैं कॉलम्स का सो ये मेनली है ना आप इसमें देखते हैं डाटा प्रोसेसिंग में हम सब एड सब्सट्रैक्शंस ये सब सिंपल है जो हम सब कर सकते हैं ये सब आप कुछ फंक्शंस हैं ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो हेल्पफुल होते हैं हम सब के लिए ओके ना यहाँ पर देख सकते हैं हम सब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं MS एक्सेल का ओके नाउ डायरेक्ट मूव करते हैं हम सब किस तरह से हम सब MS एक्सेल से सेंटर टेंडेंसी को निकाल सकते हैं सेंटर टेंडेंसी हम सब देखे थे मीन मीडियन मोड ओके तो उसको किस तरह से हम सब MS एक्सेल में निकाल सकते हैं तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सब मीन मीडियन मोड ला सकते हैं तो मेनली एवरेज के बारे में बात किया गया है सो आपके लिए एक अनदर ट्यूटोरियल है जिसके द्वारा आप आराम से समझ सकते हैं किस तरह से आप किसी भी डाटा का एवरेज निकाल सकते हैं फिर बाद में यहाँ पर कुछ स्टैटिकल टूल्स हैं बहुत सारे जो भी हम सब मैथमेटिक्स में यूज करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन रहता है एवरेज ये सब देख सकते हैं आप तो ट्यूटोरियल देखिए इजीली एंड शॉर्टकट मेथड में बताया गया है नो हार्ड बस सिंपल प्रोसेस है सो लेट्स गेट स्टार्टेड Excel also makes it very easy to calculate the average. You don't really have to mess around with the mathematical formulas at all.
because they do it for you. Coming back to the personnel database, if we want to figure out a few averages such as average salary and average hours, that can be done very quickly. All we have to do is select the cell that we want the first average to appear, click the equal sign as we do with all formulas, so hit equals, and then type in average, brackets, click on, if we're doing the average salary, click on the first cell, hit the shift button, and click on the last one, which will highlight all of them, and then click enter. You see we have an average salary of $68,303.58. We can click on the financial accounting format, and it changes it automatically for us. And now we just have to replicate that process for the average hours. We hit equal, average, brackets, click on that first cell at 34 and down to 39, hit enter, and you see the average hours of our workers are 41. Now these are dynamic, so say that Davey सो इजीली आपने एवरेज निकालना सीख गया. सो सिमिलरली आप स्टैंडर्ड डेविएशंस देख लीजिएगा एंड कोरिलेशन बिटवीन द डाटाज, तो आप कुछ फंक्शंस के द्वारा निकाल सकते हैं कंप्यूटर में. सो नाउ अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, किस तरह एमएस एक्सेल से हम सब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स कर सकते हैं, तो ग्राफ किस लिए बना सकते हैं, तो आगे जाके हम सब उसमें ढंग से शॉर्टकट देखेंगे. किस तरह Alt प्लस F1 दाबने से ग्राफ बन जाता है सिंपल. इसमें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिए गए हैं. सो तब पर भी आप देख लीजिए, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो लेट्स मूव टू अनदर ट्यूटोरियल, how to construct a graph through computer MS Excel. So let's get started. In this short beginner's level tutorial, I want to show you a simple and quick way to add charts to your Excel spreadsheets. And as you can see, the spreadsheet that I'm using for this tutorial is a spreadsheet of board games and card games. These happen to be some of my favorite board games and card games. But for this tutorial, I'm pretending that I own a small business where I sell board games and card games. And you can see here at the left, I've got the list of games, and then I have the first 6 months of the year and how many copies of each game have sold. At the bottom, I have total sales. So 252 total games were sold in the month of January, and so forth. So let's say I would like to create a chart that shows off this data and does it visually in a way that people can see and understand. There are a couple of different ways I could do this, but in this tutorial, I want to show you the easiest method that I'm aware of. And the first thing you're going to want to do in most cases is click and drag to highlight the data that you want to turn into a chart. Now, the reason you want to do that is that it gives you the opportunity to exclude certain data that you do not want to include. So, for example, in this case, I really do not want to include the total number of items sold. Why? Because in this particular spreadsheet and in the chart I would like to create, I want to be able to see visually what the best sellers are, which ones stand out, and in which month did they stand out. So that's kind of the information I'm looking for. I don't really need grand total number of total games sold. So I just click and drag to include everything else, but to exclude that extra information. Now that I've done that, I can simply hold the Alt key and tap F1, the F1 key. And that automatically generates for me a simple, quick chart. And it just तो हम सब देखा कि किस तरह से सिंपली तरीके से उसने ग्राफ्स बनाए. Alt प्लस F1 सिंपली सेलेक्ट करके ग्राफ बनाए. सो इसमें हम सबको बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. यदि आपको जानना है इस तरीके से तो आप सीख सकते हैं, पर लेकिन इजीएस्ट मेथड है तो आप उसे ही सीखें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग. तो इस टॉपिक में हम सब देखने वाले हैं 2 पार्ट है, जिससे हम सब मैपिंग के बारे में अच्छे से अच्छे नॉलेज रख सकते हैं.
तो स्पार्शियल डाटा, स्पाशियल एंड नॉन स्पाशियल डाटा। तो स्पाशियल डाटा क्या होते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं कोई जोग्राफिकल एरियाज, जैसे आपका घर, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, कोई भी बिल्डिंग्स, कोई भी नेचर की चीज। तो जोग्राफिकल एरियाज को दिखाते हैं, जोग्राफिकल स्पेस को। वेयर एज नॉन स्पार्शियल डाटाज क्या होते हैं? जो उस स्पार्शियल डाटास के इंफॉर्मेशंस को बताते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है किसी स्कूल के बारे में, तो स्कूल है जो भी वो लोकेशंस है, वो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो हो गया स्पार्शियल डाटास। वेयर एज ओके, और इस स्कूल का नाम, कितने बच्चे रहते हैं, कितने लाइब्रेरीज हैं, कितने क्लासेस हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, so it is known as non-spatial data। so ये सब हम सब चैप्टर 6 में और ज़्यादा माइन्यूटली से देखेंगे। so आपने जो भी टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, होप यू हैव अंडरस्टूड everything clearly। so if you like it, subscribe it, comment it and share it for more videos। thank you।